हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स मैजिक विद सुमेघा। आज हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस क्या होता है? चलो पिज्जा के साथ समझते हैं। राइट, तो आप सबने पिज्जा तो खाया होगा, राइट? तो फ्रैक्शन का मतलब है पार्ट ऑफ द होल। अगर जैसे कि मैं इस पिज्जा को 4 स्लाइसेस में कट कर दूं और एक खा लूं, राइट? तो मैंने क्या खाया? 1/4, that is 1/4 I have eaten, right? So we can say that 1/4 part मैंने खा लिया इस पूरे पिज्जा में से, right? So 1/4 will become the fractions, right? फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक बोलते हैं न्यूमरेटर और दूसरा बोलते हैं डिनोमिनेटर, राइट? तो न्यूमरेटर क्या होता है? कितने पार्ट्स हमारे पास है उसे बोलते हैं हम न्यूमरेटर, वो हमेशा ऊपर होता है। और कितने पार्ट्स नीचे है उसे हम कहते हैं, या कितने पार्ट्स में हमने पिज्जा को डिवाइड किया था, दैट इज नोन एज डिनोमिनेटर, जो कि हमेशा नीचे होता है, राइट? See, 1/4. See, we have this hexagon which is divided in 4 parts, right? We have divided the hexagon in 4 equal parts and we have colored the first part. This is nothing but 1/4 part is colored. Again, this is a rhombus. We divide the rhombus in 4 parts. First part, second part, third part and fourth part. And the dark green part is colored. So the colored part is 1/4. Right? Again, we have a rectangle. We have divided this rectangle in 4 parts. And the light green part is the 1/4. Right? Again, we have this square and divided in 4 parts. So one part is colored. So we called it 1/4. Right? Similarly, if we divided a pizza in different parts, like when we divide a pizza in 2 parts, right? And we have ate one part already. So what we call it? What we are left with? We are left with 1/2, right? 1/2. 2 is the one, 2 is the thing in which pizza is divided, right? So pizza is divided in 2 parts. Pizza को हमने कितने parts में divide किया है? 2 parts में divide किया है, तो हम उसे लिखेंगे denominator में। और न्यूमरेटर में क्या आएगा? जितना पार्ट हमने खा लिया। तो हमने या खा लिया, या फिर हम क्या कह सकते हैं? जितना पार्ट हमारे पास है। तो हमारे पास कितना पार्ट है? 1 पार्ट। सिमिलरली 1/3। अब मैंने पिज्जा को 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट डिनोमिनेटर में लिखा। अब मेरे पास कितना पिज्जा है? ओनली 1 पार्ट, सो वी जस्ट राइट इट हियर 1। अब मैंने अपने पिज्जा को 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4, एंड हाउ मच इज लेफ्ट? वी हैव ओनली 1 पिज्जा इज लेफ्ट, जस्ट राइट 1। अब लास्ट में मैंने क्या करा? अपने पिज्जा को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, सो राइट इट 5 इन द डिनोमिनेटर, एंड हाउ मच इज लेफ्ट? 1। Okay, now again we have lots of images and we have divided them in equal parts. So हमारे पास again एक सर्कल है जिसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अगर मैंने अपने सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2, and the red part which is colored one is the top one, right? Which is 1. In this one I have divided the square in 4 equal parts. तो 4 कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में। और न्यूमरेटर में क्या आएगा? 1 which is colored. इस टाइम मैंने सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, एंड 1 पार्ट इज पर्पल, सो जस्ट राइट 1 इन द न्यूमरेटर। ट्राइंगल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट मीन्स यू नीड टू राइट इन डिनोमिनेटर 2, and 1 part is colored, so just write 1 here. In this one, look at this. The circle is divided in how many parts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Just write 12 in the denominator. And out of 12, how many are colored? 1, 2, 3, 4, 5, 6 are colored. Just write 6 at the top. Is it clear? Now the next one.
In this rectangle, you can see this rectangle is divided in 1, 2, 3, 4 equal parts. Just write 4 in the denominator, and how many are colored? Only 1 is colored. So write 1 here. Okay. Now the circle. Circle is divided in how many parts? 1, 2, 3, 4, 5. Just write 5 here, and 1 is colored. In the square, you can see the square is divided in 1, 2, 3, 4. 4 equal parts, and how many are colored? 1 and 2. First part and the second part. So just write 2 here. अब मैंने इस सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 4 इक्वल पार्ट्स में, एंड हाउ मेनी आर कलर्ड? 3 आर कलर्ड. राइट? हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? चलो अब हम ड्राइंग टाइम. चलो ड्रॉ करते हैं. ड्रॉ एक सर्कल. ड्रॉ अ सर्कल. ओके. एंड उससे 2 पार्ट्स में डिवाइड करो. राइट? इस तरीके से. And color one of them. Let's choose the purple one. Okay, choose according to your choice. Okay, which is your favorite color? Just color them like this. Okay, जब हमने सर्कल का हाफ पार्ट कलर कर दिया और एक पार्ट रहने दिया, तो ये सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 1/2. राइट? इसे क्या बोलते हैं? 1/2. दैट इज, पहले मैंने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, विच इज इन द न्यू डिनोमिनेटर, और उसका फर्स्ट पार्ट 1 पार्ट मैंने कलर कर दिया पर्पल में, तो दैट विल कम इन एट द टॉप इन द न्यूमरेटर. अब कहते हैं हम दूसरा एक और ड्राइंग करते हैं. लेट्स से विद द ब्लू कलर. ड्रॉ अ सर्कल एंड डिवाइड देम इन 3 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस. ओके, एंड यू हैव टू कलर. उसको हमें एक पार्ट को कलर करना है, तो मैंने उसके लिए इस तरीके से एक पार्ट को कलर कर दिया. राइट? तो ये जो मैंने एक पार्ट कलर करा है और सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था, तो फ्रैक्शन क्या बना? सबसे पहले तो मैंने उसे 3 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज डिवाइडेड बाय 3 इन द डिनोमिनेटर. एंड इन द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या आएगा? जितना पार्ट मैंने कलर करा है, दैट इज 1. सो द फ्रैक्शन विल बिकम 1/3. ये एंड द थर्ड, इसके बाद एक और फ्रैक्शन अपन करते हैं जिसमें हमें क्या दे रखा है? 3/4. राइट? तो हमने क्या करा? एक और सर्कल ड्रॉ करा और उसे हमने किस पार्ट में डिवाइड करा? 4 पार्ट्स में. राइट? नाउ दे आर सेइंग दैट यू हैव टू कलर 3 पार्ट्स. राइट? सो कलर 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट. राइट? नाउ द सेकेंड पार्ट. राइट? and the third part. Let's say this one. Okay, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने थे जिसमें हमने डिवाइड करा? 4. राइट? so 4 must be at the bottom. And in the numerator, how many parts we have colored? We have colored 3. so 3 must be in the numerator. Have you understood this thing? Very good. अब हम क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शन सिर्फ बुक्स में नहीं होते, बट रियल लाइफ में भी होते हैं. जैसे कि जब मम्मा बोलती है कि हाफ ग्लास मिल्क पी लो प्लीज, तो दैट इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन. कैन यू सी दैट? half glass of fraction, half glass of milk, right? It is a fraction. 15 minutes in a clock, right? 15 minutes. मम्मा मैं 15 minutes में आ रहा हूँ. मम्मा मैं 15 minutes में आ रही हूँ. That is actually 1/4 of an hour. मतलब 1 घंटे का 1/4 part. Right? Now, have you ever shared a chocolate with your friend? Dairy milk or Kit Kat. So see here, we have a Kit Kat and we have 4 parts of the Kit Kat. And if you share 2 parts of your Kit Kat, so actually 2/4 of the part you have shared. Right? So this is also a real life example of fraction. अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं. Right? चलो. Now, what is the fraction if you eat 2 out of 4 slices? मैंने अपने एक पिज्जा को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. राइट? और उसमें से 2 पार्ट्स आपने खा लिए, तो कितना पार्ट एक्चुअली आपने खाया है? राइट? सो यू हैव अ पिज्जा एंड यू कट इट इन 4 पार्ट्स एंड यू एट फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट. तो आपने कितना पिज्जा आपने खाया है? आंसर बताओ. The second one is, what is the denominator in 3/5?
And the third one is, which one is bigger, 3/4 or 1/4? This one is a very good question. So how you can do this? It's a hint that you have a pizza. अब उस पिज्जा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, एक बार 3/4 खा लो और एक बार 1/4 खा लो, राइट? तो कौन सा वाला बड़ा पिज्जा तुमने खाया? Just answer me fast and write in the comment section. Fast. So, ग्रेट जॉब दोस्तों. अब आप सब लोग फ्रैक्शन स्टार्स बन गए हो और आप सब लोग मोर प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट्स डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन. वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो.